हेलो इन्वेस्टर्स। आज मैं अपना दूसरा वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। आपने देखा होगा कल मैंने अपना पहला वीडियो डाला था राकेश झुंझुनवाला जी की याद में, who's my mentor, at least in my head, as I said. And this channel is a tribute to him, his investment strategy and his investment principles. तो अपने दूसरे वीडियो में जैसा आपने देखा होगा, आपको याद होगा, कल मैंने बोला था there's a difference between investing and in speculating or trading. तो आज मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगा कि इन दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है और वो डिफरेंस क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। पहली चीज, लेट्स टॉक अबाउट ट्रेडिंग फर्स्ट और स्पेकुलेटिंग फर्स्ट। ट्रेडिंग एंड स्पेकुलेटिंग आर बेसिकली द सेम थिंग। ट्रेडिंग से मेरा मतलब है कि एक स्टॉक खरीदना और फिर दिन भर उसको बैठ के देखना कि उसका प्राइस जब ऊपर जाए तो मैं उसे बेच लूं, या फिर अगर नीचे जाए तो मैं और खरीद लूं। और ये आप डेली बेसिस पे करना है। दिस इज अ रेगुलर एक्टिविटी। वेयर एज स्पेकुलेशन इज, रात को सोते टाइम आपको लगा कल शायद इस स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, तो मैं सुबह उठते ही खरीद लूंगा एंड देन टुवर्ड्स द इवनिंग आई विल सेंड इट बिकॉज द प्राइस वुड हैव इंक्रीज्ड। However, there's no basis for this. This is all guesswork, और guesswork बहुत रेयरली सही होता है। हमने बहुत बार देखा है कि अच्छे अच्छे स्टॉक्स बिना रीजन गिर जाते हैं, बहुत ही अचानक चढ़ जाते हैं। So this is all guesswork. Whereas investing is not really guesswork. Investing is something which is much more fundamental. और इन्वेस्टिंग से मेरा मतलब है कि ऐसा कोई स्टॉक पिक करना जो आपको लगता है कि इट्स वेरी हाई वैल्यू एंड देन वेट फॉर द प्राइस ऑफ दैट स्टॉक टू इंक्रीज। इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में? मेन डिफरेंस ये है कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं, every time you trade a stock you have to pay brokerage, and the brokerage is not small, it's quite a big amount. Sometimes it's as high as 0.5%, 0.4% of your trade value. It may look very small, but in reality, if you're doing the same trading every day, you're losing a lot of money just on brokerage. Whereas in investing, आप एक बार स्टॉक खरीदते हैं and then you wait for 6 months, 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years for the price of the stock to rise, and then you sell it only once. So आप सिर्फ 2 बार ब्रोकरेज देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये चीज बताता हूँ। लेट्स टेक अ लुक एट one of the stocks that I had invested in on which I exited quite early, but still it's a very good example. It's Seat. मैंने Seat का स्टॉक खरीदा था 70 पे, और आज की डेट में उसका रेट चल रहा है शायद 1300, 1400, something around that. I sold the stock at 250. I still made quite a decent return on my investment. In a short span of time, I could have made more, but still, that was investing. When I bought it at 70, मैंने एक बार ब्रोकरेज दिया. When I sold it at 250, मैंने दूसरी बार ब्रोकरेज दिया. लेकिन जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो पहले उसे 70 पे खरीदेंगे, फिर जब वो 90 पे आ जाएगा तो उसे बेचेंगे, then they'll wait for it to come down again, and then when it comes down to, let's say, 80, they'll buy again, and then they'll maybe sell it at 100. So in each of these transactions, they are paying brokerage charges which could have been avoided if they just waited for it to rise to 100 and sold it at 100. So there's a fundamental difference between these two strategies. One is के इन्वेस्टमेंट में आप ये देखते हैं इज इट वर्थ द वैल्यू और नॉट, whereas in speculation you're just gambling. अब आप डिसाइड कीजिए आपको गैम्बलिंग करनी है या नहीं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, टाटा एलेक्सी का। नाउ टाटा एलेक्सी टुडे इज अ वंडरफुल कंपनी, but just 2.5 years back it was a really small company. That is when I had invested in the stock. I entered the stock and I exited after making roughly 5 times my invested value. For me, that was good enough return. If I had waited, I could have made 20 times my invested value. Well, this is how investing is. You exit at what is good for you. So now that we are clear on investing versus trading or speculation, मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम ये इन्वेस्टिंग करें कैसे, which stocks to pick, how to pick, and what is the basis of identifying the right stocks. How do we know the intrinsic value of a stock? So let's discuss that in the next video. Please wait for it, and please subscribe to my video, like the video,
and watch it again. If there's not something which is not clear, please feel free to add comments on the video. I'll be happy to respond. Thank you.